Hi everyone, today we are going to learn about the one of the base candlestick pattern. There are lots of candlestick patterns. दोस्तों लाइव कम पड़ जाएगी पर उतनी हम अप्लाई नहीं कर पाएंगे. Video will be in Hindi and English. So let's see. First of all, we would like to go with the Bank Nifty chart जहाँ पे आपको दिखेगा today we have got the bullish engulfing. Engulf means to cover. Engulf means cover. यानी कि किसी चीज को कवर करना. ओके सो यहाँ पे देख सकते हैं कि yesterday we got the red candle and people had started to give the downward targets, and today we are getting the upward targets, right? So don't do these kind of things. So yesterday's candles high and low, राइट. सो यहाँ पे मैंने दो लाइन्स रख दी है मैंने. ओके आई हैव ड्रॉन टू लाइन्स टू शो यू गाइज एंगल्फ. हु हैज एंगल्फ? बुल्स हैव एंगल्फ टू द बेयर्स. यानी जो बुल्स है उन्होंने बेयर्स को एंगल्फ कर दिया, यानी उनको ट्रैप कर दिया. सो दे हैव ट्रैप्ड टुडे, राइट. सो बट ये तो कंक्लूजन क्या है देखते हैं. सो दिस इज द बुलिश एंगल्फिंग मीन्स यहाँ पे वी कैन कंसिडर द बाय. दिस इज ओनली फॉर एजुकेशनल पर्पज. वी डोंट रेकमेंड टू बाय और सेल एनीथिंग, राइट. सो यहाँ पे निफ्टी, बैंक निफ्टी नीड्स टू क्रॉस दिस हाई 38918. बट देखते हैं एज पर द बुलिश एंगल्फिंग एंड व्हाट will be the base supports. Definitely today's we have felt the bullish power जहाँ पे हमें अच्छा खासा बैंक निफ्टी में at the closing bell we had seen the amazing bull power, right? Bank Nifty had given the big up move in the last closing bell time. So यहाँ पे this low 38,000 can be the base support. You can save this level 38,000 in the mind, right? जब तक ये break नहीं होता है you don't need to worry. Okay, so this is about the Bank Nifty. This is the bullish engulfing pattern. This is one of the base and powerful pattern. As per the book, only the green candle's real body needs to cover this red candle's real body. यानी जो green candle के real body है उसे red की real body को cover करना है. But as per the my practical example, practical experience, this kind of engulfing can be the more powerful. Where when we get the open below this red candle, that means we got the gap down opening, and after that Bank Nifty had filled that gap down, यानी gap down fill हो चुका है, यानी यहाँ पे ट्रैपिंग शुरू हो गया था. After that it had given the close not above the open, but it had given the close above the high. That is one of the best sign of strength. It has shown the bull strength, right? So this is about the Bank Nifty, and never change the trend, never change the mind by getting two red candles. Okay, always wait for the lower top lower bottom to defend the downtrend. यानी lower top lower bottom की wait करनी चाहिए. Yes, but there is trouble in the Nifty chart. So कई बार ऐसा होता है कि Bank Nifty shows the bullish strength and Nifty doesn't show, right? So यहाँ पे आप देख सकते हैं कि निफ्टी में, बट निफ्टी में भी यू कैन कीप दिस लेवल इन योर माइंड. यू कैन कंसिडर दिस लेवल विच आई एम गोइंग टू शेयर विथ यू गाइस एज अ सपोर्ट लेवल. सो यहाँ पे आप देख सकते हैं ट्रेंड लाइन वी कैन ड्रॉ लाइक दिस. ओके, सो दिस इज कॉल्ड द ट्रैप. यहाँ पे कई बार क्या होता है कि yesterday we were talking about the Nifty will touch the, few people were, not everyone was talking about the 16,000, 15,000, 14,000, बट कई लोग ऐसा कहते हैं. बट यहाँ पे आप देख सकते हैं कि गैप डाउन था, यहाँ पे वी गॉट द गैप डाउन. आफ्टर दैट वी गॉट द रिएक्शन, यानी टुडे वी हैव गॉट द क्लोजिंग अबाउट द previous day closing, right? So this is the showing the reaction, right? Now Nifty needs to cross this low, right? अगर उसे bear के साथ जाना है, if Nifty wants to go with the bear, then Nifty needs to cross this low 17345. But instead that low, if Nifty fills this gap, then bull may come back, right? So this is about the Nifty, right? So never short after getting two red candles. Always wait for the reaction and then go below this level for sell, and this is 17345.20. so this can be the base support. We can consider the acid test level for the Nifty as a support for the bull, right? And even right now we can say there is a war between
bulls and bear. Why? Because as per the Nifty there is a gap down. Gap down indicates the strength. Bears are the powerful. But today what we have faced, this is the line of two candles, right? This is the pattern of two candles, right? Which pattern is this? Kindly comment, we will reply. This is the also the bullish pattern as per the or as per the combination of, or as per the these two candles, right? So kindly comment, we will definitely reply you. Okay, so as per this, Nifty is stuck between the bulls and bears. So let's see what happens tomorrow. If Nifty fills this gap, so Nifty needs to cross the 17710 to fill this gap. Gap means the difference between this low and this high. तो ये low और ये high का जो difference है उसे fill करना पड़ेगा Nifty को. So if Nifty crosses the 17710, then you know what can happen. There will be the bull power, right? So this is about the tomorrow's Nifty and Bank Nifty. So which pattern is this? Don't forget to reply. सॉरी कमेंट, राइट, वी विल रिप्लाई दैट. तो फिर मिलते हैं नए वीडियो के साथ. तब तक के लिए गुड बाय, टेक केयर, फॉलो द स्टॉप लॉस, बिलीव इन योरसेल्फ, राइट, स्टे अवे फ्रॉम द रूमर्स और एनी न्यूज लाइक चाइना हैज अटैक फ्रॉम ताइवान एंड यूके इन्फ्लेशन इज द क्या बोलते हैं उसे बहुत ही हाई हो चुका है. पहली बार इसका वो डाउन हुआ यूरो यूएस के सामने. ऐसी सब चीज़ों से दूर रहिए, राइट. तो फिर मिलते हैं दोस्तों.